Dipole, you are saying I have explained you. Intensity at point on axis of electric dipole. Intensity at point on axis of electric dipole. Two equal and opposite charges separated by finite distance is called as electric dipole. So if A and B are point where we have got equal and opposite charge separated by distance 2L, O is the center, therefore OA equals to OL equals to LL. P is a point on the axis. Now intensity due to negative charge, is directed inward. I'm calling that E1. Intensity due to positive charge will be directed outward. I'm calling it as E2. What is intensity due to point charge? 1 upon 4 pi 4 pi epsilon epsilon naught Q upon R square. R square. So if P is point at a distance R from center O, P is a point at a distance R from center O, then can you tell me what is A to P distance? A to P L distance? plus R R. plus L. R R minus L L. plus R. Yes. R plus L square directed inwards. Directed inwards. And E2 will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q, and distance from this B to point P is R minus L square. It is Sir, directed, yes. Follow? can you Kya? explain the distance part? Distance part. This is O. This is P. This is A. These are L, L. And this is R. तो ये A to P distance क्या Yes, होएगा? sir, got it. ठीक है ना? So it is directed outwards. It is directed outwards. Right, till this. Intensity at point on axis of electric dipole. So dipole means two charge, equal opposite. First we found intensity of negative charge, then positive charge, E1, E2, inward, outward. Then I will find resultant. Sir. Yes? Hello? Hello? Sir, you are not audible. Now it is audible? Yes. So I was audible only. Maybe a problem is there in my computer. No, it can happen on either side, don't worry. Now you have written E1, E2. Yes, sir. Everybody has written. Can I clear it off? Yes, sir. Sir. Say what?
सर ये E1 जो इनवर्ड आउटवर्ड का डायरेक्शन है हम्म, वो एक बार बताइए ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे इफेक्ट कर रहे हैं? Sir, ये कौन सा चार्ज है? ए पे नेगेटिव है ना? sir, could you explain the distance again? हु इज दिस? For Trupti. ग्रुप तो इतना छोटा छोटा चीज अगर 10 बार पूछने तो पिछले साल हम लोग कंप्लीट करेंगे Sir, सिलेबस। I had some connection problem. Then you see the all this recorded lecture. If there are 20 students, everybody says 2 minutes, explain again, explain again. Should I, do you think in my place we can complete the syllabus? Then you will say, sir, portion is not completed. And few things are, this is self-explanatory. You are trying, repeat, and you are behaving as if that you have just joined 11th standard. Now this is A, this is center, this is B, this is L. थोड़ा खुद का दिमाग यूज करेंगे ना तो मार्क बहुत मिलेगा. Don't rely every time on teacher. This is R, this is point P. अभी आप खुद से खुद का दिमाग लगा के बोलो what is A to P distance. You will not require my help only. What is Okay, sir. A to P? You tell. थोड़ा खुद का जरूर करना दिमाग इस्तेमाल. नहीं तो क्या, it is total spoon feeding ना. A to P. Tell me what is distance. You only tell. And I think you will tell right only. Full confidence I have. Sir, L plus R. R plus L. And what will be B to P distance? R minus L. तो ऐसा खुद से सेपरेटली ड्रॉ करके बना दो ना. अगर बार बार आप मुझे छोटा छोटा चीज पूछेगा, आप सोचो मैं कैसे कंप्लीट करूँ पोर्शन, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है. चलो अभी एक जन डायरेक्शन पूछ रहे थे, ए पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है. ये एक बार पूछा, आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि ये नया टर्म है हमारे लिए. यस, यू आर देयर? यस चेडा? Yes, sir. हाँ, व्हाट इज नेगेटिव चार्ज से डायरेक्शन ऑफ द फील्ड? फॉर नेगेटिव चार्ज रिमेंबर इनवर्ड, फॉर पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड. इनवर्ड मतलब ये अपना तरफ खींचेगा, तो पॉइंट पी को ये अपना तरफ खींचेगा, ऐसे इनवर्ड. लेकिन अगर ये चार्ज इधर पॉजिटिव है तो इधर से बाहर जाएगा ये पॉइंट से, ऐसे. तो इसको बोलते हैं पी को अपना तरफ खींचेगा, पी को पुश करेगा, इसको बोलते हैं आउटवर्ड और इसको बोलते हैं इनवर्ड. समझ में आया? अभी आया समझ में? अभी आया समझ में जो पूछा था जिसने डायरेक्शन? यस सर. अब मेरे पास दो फील्ड है, एक E1 है और एक E2 है. दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है. उस दिन मैंने बोला था दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो आपको क्या करना है? ऐड, है ना? Yes. और ऑपोजिट में है तो क्या करना पड़ेगा? Subtract. वेरी गुड. सबट्रैक्ट में मुझे ध्यान देना पड़ेगा लार्जर माइनस स्मॉलर. अगर नहीं ध्यान देना है तो मैं मॉडुलस का साइन डाल दूंगा. E1 का डिनोमिनेटर दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन पे नहीं, अब जो लिखा होगा अपने बुक में दिख रहा है. E1 का डिनोमिनेटर क्या है? R plus L square. सुपर सुपर. एंड E2 का क्या है? R minus L square. कैन यू टेल कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? Plus L square. ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका आंसर क्या होता है? मोटा. Bada. यस Bada. यस. सो कैन आई से E2 is greater than E1 because उसका डिनोमिनेटर is हाँ, E2 is greater than E1, so resultant intensity comma E will be E2 minus E1. ओके, बिकॉज E2 बड़ा है ना. नहीं समझ में आया बोलो जरा. सबको समझा ये क्यों मैंने E2 पहले लिखा? Yes. क्योंकि E2 बड़ा है. अभी मुझे किसने बताया E2 बड़ा है? आप लोगों ने बताया. डिनोमिनेटर छोटा तो आंसर मोटा. सो आई एम राइट और रॉन्ग? Right. वेरी गुड, वेरी गुड. Now E2 value I know. It is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus L square. Correct? No? Yes.
and E1 is Q upon R plus L square. This also correct? हाँ Now what is common? 1 upon 4 pi epsilon naught. Q एक second रुको, एक second. So 1 upon 4 pi epsilon naught. Q also. Q is common, na? 1 upon 4 pi epsilon Q common. 1 upon R minus L square minus 1 upon R plus L square. Any difficulty till this? No. हाँ. Now अभी जरा रुक जाना, अभी थोड़ा algebraic expressions के जैसा solve करना. I can cross multiply or not this two. Yes. So it is R plus L square minus of R minus L square R plus L square R minus L square. ये डिनोमिनेटर आ गया. I hope clear. ये क्लियर हुआ कि फिर से बताओ ये क्या किया? No, sir. आ गया ना, ठीक है. Now denominator is like something plus something, something minus something. So something plus something, something minus something और outside दोनों का common power 2 ले लो. ये r square plus 2lr plus l square. This will be r square minus 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 plus 2lr and plus minus l square. जगह नहीं. 1 upon 4 pi epsilon naught q. This will become r plus l, r minus l, the whole square. And this is r square plus 2lr plus l square minus r square plus 2lr minus l square. R square minus r square, L square cancel. So we get E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q. 2lr plus 2lr means 4lr. A plus b, a minus b is a square A square minus minus b. B. Okay, and outside 2, na? Correct, no? Yes, sir. Yes, sir. Please copy this one. तो एक बार थियरी परफेक्ट हो गया ना, फिर मैं आपको लिस्ट ऑफ फॉर्मूला थोड़ी देर क्या दिखाऊंगा. वो पूरा बढ़ के रखना, फटाफट फटाफट सम होगा. लेकिन अगर थियरी नहीं मालूम है, फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो 10,000 भी सम कर दो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. लेकिन थोड़ा सा स्पीड में डायनामिज्म रखो. Once you complete, please guide me so that I can move ahead. Done. Okay. No problem. 1 upon 4 pi epsilon naught. See, 2L into 2R will become 4LR. So 4LR को मैंने 2L into 2R कर दिया. Upon R square minus L square का square.
What is this 2LQ? Dipole P. moment. Dipole moment. Correct. Electric Correct. dipole. Correct. 2LQ is P, which is called electric dipole moment. अभी देखो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सम आएगा ये सब में. So E becomes 1 upon 4 pi epsilon naught 2, ये 2, फिर ये पूरे का मतलब P into R square minus LR square का square. The R is distance of point P, which is very large as compared to distance from center. That means that L is small as compared to R. तो स्मॉल वाले का स्क्वायर करेंगे ना, सेंटीमीटर में तो बहुत स्मॉल रहता है, और अगर लार्ज वाले का स्क्वायर करूंगा तो बहुत लार्ज होगा. लाइक 1 का स्क्वायर किया तो 1, लेकिन अगर मैंने 100 का स्क्वायर किया तो 140 आ जाएगा, बहुत ज्यादा. So since L is very small than R, therefore L square can be neglected. L square can be neglected. L square can be neglected. So E becomes 1 upon 4 pi epsilon naught 2 PR R square raised to 2. That is 1 upon 4 pi epsilon naught 2 PR upon R raised to 4. So it becomes 1 upon 4 pi epsilon naught 2P upon R cube. This is resultant intensity at any point on the axis. इधर तक लिखो, फिर इसका डायरेक्शन और फिर एंगल बिटवीन P एट E देखते हैं हम लोग. लिखो, अच्छे से लिखो, डाउट है तो फिर से पूछो. Done, sir. Okay, everybody is done till that last line. Yes. Okay. अभी थोड़ा सा ना अपना विजडम को वाइज रखना, वाइड कर लो. ये E2 है बराबर, और ये E1 है. E2 बड़ा है, 10 है सपोज, और ये 4. तो रिजल्ट कौन से डायरेक्शन में आएगा आप बताओ खुद से. E2. E2 में, मतलब डायरेक्शन ऑफ लार्जर ना. E2 किधर से किधर एक्ट हुआ, माइनस से प्लस ना, माइनस क्यू से प्लस क्यू बाहर गया ना ऐसे, और P बार भी यही डायरेक्शन में होता है ना. सो आई कैन राइट फर्दर द डायरेक्शन ऑफ intensity at any point on axis is from negative charge to positive charge, that is in the direction of P bar. इसका मतलब E बार on axis and P का direction same है, therefore angle between E bar and P bar is 0 degree.
तो अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में किसी ने पूछ लिया तो E और P का डायरेक्शन सेम, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा वीडियो ऑफ कर दो अपना, किसी का वीडियो ऑन हो गया है, 2p बार का डायरेक्शन और ये r की, तो ये वेक्टर फॉर्म में ये आंसर हो गया। इसका मतलब p और e का डायरेक्शन सेम सेम है। प्लीज डू इट नाउ दिस मच। ध्यान से। ओके, so now can you tell me what will be formula for intensity at any point on the axis? 1/4 pi epsilon naught 2p upon r cube, 1/4 pi epsilon naught 2p upon r cube. Next one, intensity at any point on equator of electric dipole. At any point on equator of electric dipole. What is meaning of equator? Perpendicular to axis. Very good. And passing through where, beta? The center. Center, हाँ। तो मतलब ये अगर इसको मैं लिया नेगेटिव चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट A and B, separated by distance 2L, O is center, OA equals to OB which is L, P is a point at a distance R from center O on the equator, मतलब perpendicular पे है। If I join AP, can you tell what is AP distance? Root of R square. L square plus R square. हाँ, पाइथागोरस थ्योरम। ये कितना होगा? सेम ना, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों सेम हुआ क्या? नहीं, Yes. अगर सेम है दो साइड तो ये ट्राइंगल का कुछ नाम है स्पेशल? Isolatral. Isosceles. आइसोसेलेस। Isosceles. आइसोसेलेस के बेस एंगल सेम होते हैं ना, बेस एंगल सेम। Yes. ओके, इतना तो ड्रॉ करो आप, फिर आगे मैं समझाता हूँ। हो गया? इतना डायग्राम तो बता देना मुझे।
समझ के करो, चलो आराम से अच्छे से करो। Sir, done. Done. Okay. For negative charge, what is direction of intensity? Inward ना, है ना? तो इस Yes. पॉइंट पी पे नेगेटिव चार्ज की वजह से इनवर्ड होगा E1, और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इट विल मूव आउटवर्ड फ्रॉम हियर, आउटवर्ड आएगा ये E2। डायरेक्शन पार्ट किसी को कुछ डाउट? डायरेक्शन पार्ट पे कोई डाउट नहीं ना? इनवर्ड फॉर नेगेटिव, आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव। हेलो? Yes. Sir. So if I draw one ray parallel to AB, this angle is theta. So what about this angle? 90 minus. थीटा। थीटा ऑल्टरनेट है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ऑल्टरनेट हो जाएगा ना, 90 माइनस अच्छा। ऑल्टरनेट। तो E1 का दो कंपोनेंट होगा, एक थीटा का बाजू वाला E1 cos, और ये बाजू में नहीं है वो E1 sin। ये भी समझ गए आप दोनों कंपोनेंट? Yes, sir. नाउ E2 का लेट अस चेक the component of E2. If these two lines are parallel, this is transversal. What are these two angles called? These two, their corresponding angle. Yes. So even this is theta. So E2 will also have two components, E2 sin theta and E1 cos, E2 cos theta. Please draw in the diagram this much. E1 is towards that minus q, having two component, one is sine, other in cos. Same way E2, two component, E2 sine upward, E2 cos horizontal. Done? Yes, sir. Okay. Now can anybody tell me the magnitude of E1? What will be magnitude of E1? 1 upon 4 pi epsilon naught q upon AP square. Point charge का यही तो फॉर्मूला है। So 1 upon 4 pi epsilon q upon root of r square plus L square का square. That means 1 upon 4 pi epsilon q upon r square plus L square, क्योंकि रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कोई शक इधर तक?
9. Okay, please write E1 wala formula. E1 can I clear? Yes, sir. E1 सबने लिख लिया ना. E2 is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon bp the whole square. This is b2p bp the whole square. But fortunately, bp is also same as that ap, root of r square plus l square ka square. That means E2 is 1 upon 4 pi epsilon q upon r square plus l square. So even E2 magnitude wise they are same to same. Yes. Yes. Right down, right down. Yes, Mansi, Gargi, understanding? Yes, sir. Okay, right down. So we got even E2 are equal in magnitude. Then even E2. Okay, done till E2 also. Yes, sir. Now even E2 can be resolved into two components which we have shown in the diagram. E2 sign is upward, even sign is downward. Because they are equal opposite, what will be result? 0. 0. Zero. Zero. इसका क्या मतलब हो गया कि E1 E2 का एक टुकड़ा ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गया ना. Yes. तो खाली कौन बच गया बताओ? E1 cos theta, Horizontal. E2 cos हाँ, theta. E1 cos और E2 cos बच गया. सो आई कैन से म्यूट कर लो अपने आप को. Since E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite, hence they cancel each other. Therefore, resultant intensity E equals to E1 cos plus E2 cos theta. E1 is same as E2, तो मैं इसको 2 times E2 cos theta लिखूंगा तो चलेगा, because E1 E2 same to same. E2 is 1 upon 4 pi epsilon q upon r square plus l square, and cos theta in this triangle is adjacent side L upon hypotenuse, which is root of r square plus l square. Any doubt to any student? Cos theta wala? Hello, understood now? Yes. So I'm getting E equals to 2 QL upon 4 pi epsilon naught
R square L square, इसका पूरे ब्रैकेट का पावर इज 1, नो? ये 1 है ना पूरा? हाँ, yes. और ये इसका क्या है? 1 by 2. 1/2. 1/2, what is 1 plus 1 by 2? 3/2. 3 by 2. So this will be R square plus L square raised to 3 by 2. Please copy till this. R square plus L square raised to 3 by 2. But Q into 12 means P. So E will become 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R square plus L square raised to 3 by 2. R square plus L square raised to 3 by 2. Completed? 1 upon 4 pi epsilon naught P. Denominator is R square plus L square raised to 3 by 2. Okay, clear? Hello? Yes, sir. The last line done? Yes. Yes, sir. Again, it is short dipole. That means R is very large as compared to L. So we'll write since L is very, very small than R, so L square can be neglected. Therefore, E becomes
1 upon 4 pi epsilon naught P upon R square. L square is neglected, raised to 3 by 2, 2 cancel. So E becomes 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R. This is expression for intensity at equator. This is expression for intensity at equator. Now my problem is of that direction. सर इंटेंसिटी के बाद क्या है? At equator. ओके At equator. अब ये पॉइंट है, ये इनवर्ड था, इधर से आउटवर्ड, ये रिजल्टेंट दिखा हम लोग को E1 cos E2 cos. कैन आई से इसको वो उल्टा है, इसको एंटी पैरेलल. Can you please repeat? बेटा वीडियो ऑफ कर दो. I said our P bar, that means electric dipole, is directed from negative to positive. Please off the video. हाँ ऐसे है, और ये E का रिजल्ट ऐसे आया ना, Yes. तो दोनों के बीच में क्या एंगल होगा? एक ऐसे 180 degree. 180 180. मतलब P और E are anti parallel to each other. Angle between them is 1. Everybody is follow now why 180? यस तो इसके बाद इतना लिख लो पूरा, उसके नीचे मैं वही लिखता हूँ डायरेक्शन वाला पार्ट. Intensity at equator is opposite to P bar. Therefore, angle between E equator and P bar is 180 degree. Therefore, in vector form, E equator in vector will be 1 upon 4 pi epsilon minus P bar upon R cube. Minus indicates direction are opposite. So we got intensity due to point charge वाला formula, due to dipole at axis equator. अब dipole का कोई भी जगह पे होगा तो क्या आएगा वो करेंगे. Exactly उसके जैसे potential आएगा, फिर दोनों का relation आएगा, फिर flux आएगा, फिर गॉसेस थ्योरम आएगा. गॉसेस थ्योरम की मदद से इंटेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी आएंगे. दैट विल कंप्लीट वन पार्ट ऑफ द चैप्टर. फिर सेकेंड पार्ट चालू होगा जिसमें कैपेसिटी आएगा और पोटेंशियल बिटवीन कंडेंसर आएगा. If you complete again, please guide me so that I can start ahead. Go ahead. Badekar, Yes, sir. understanding well? Yes. We are going slow, fast or comfortable? Very comfortable, sir. ठीक है. Completed, sir. Very good. So we got intensity due to point charge which was 1 upon 4 pi epsilon q by r square. लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल आया तो r क्यूब हो गया. तो intensity at any point on axis is 1 upon 4 pi epsilon 2p upon r cube. Equator 1 upon 4 pi epsilon p upon r cube. Now intensity at any point due to short dipole, its magnitude and direction.
मैग्नेटिज्म में भी ऐसे ही है, उधर इंटेंसिटी की जगह पे मैग्नेटिक इंडक्शन होगा. So intensity at any point due to short dipole, short electric dipole. राइट हेडिंग. ये सब 11th वाला टॉपिक है आपका. 11th में इतना हुआ नहीं रहता अच्छे से, इसलिए ये थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं. मोमेंट वी कम टू गॉसिस थ्योरम, कैपेसिटर, तो इजी लगेगा बहुत. अगेन सेम कॉन्सेप्ट. कंसिडर electric dipole consisting of equal opposite charge minus q plus q separated by distance 2l. Let O be the center, therefore OA equals to OB equals to L. This time P is the point at a distance R from center O such that line joining OP makes angle theta with the axis. इसको axis बोलते हैं जो माइनस से प्लस से पास हो. Draw this much. A and B पे दो चार्ज है, distance is 2L, O is center, so OA equals to OB, P is the point at distance R from center O, such that line joining OP makes angle theta with the X. Done? Yes, sir. As electric dipole moment P bar is a vector quantity. अगर वेक्टर है तो it can be resolved into two components. Hello? If it is vector, it can be resolved into two rectangular components. Yes, sir. Okay. So it can be resolved into two rectangular components. So this is P bar. I am resolving this into two components. One in the direction of OP, second perpendicular to OP. So one we can resolve in this direction. So थीटा का बाजू वाला हो गया ना ये, तो इसको P cos थीटा बोल दो, चलेगा क्या? हेलो? Yes, sir. और इसका परपेंडिकुलर जो है उसको मैं P sin थीटा बोलूं तो चलेगा ना? ये दोनों के बीच में एंगल है. सबको समझा? P एक वेक्टर था फ्रॉम along the axis, तो उसका दो कंपोनेंट निकाला मैंने, along OP and perpendicular to OP. One is P cos, other is P sin. Now this point P, can you say it is on the axis of electric dipole whose moment is P cos theta? क्योंकि ये लाइन पे है ना, P cos theta. Sir, Yeah, बोलो. please, can you please repeat the resolution part? You have written this much? No, I'm writing. Right, first, right. आराम से लिखो पहले. लिख के हो गया तो फिर पूछना, फिर रब करके यहाँ पे बताता हूँ डायरेक्शन. As electric dipole moment P bar is vector quantity, it can be resolved into two rectangular components. हो गया? Done. Okay. अब खाली आप बोर्ड पे ध्यान से देखना. आपको ये पता है एक वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है, ये पता है? हाँ. किसको हम कॉस कोसाइन बोलते हैं? जो थीटा के बाजू में होता है ना. Yes. और दूसरा वाला जो उसको परपेंडिकुलर होता है वो साइन कंपोनेंट होता है.
ये बात तो शायद आपको पता होगा। हाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ, कंपोनेंट बनाता हूँ, आप मुझे बताना साइन कौन सा है और कॉस कौन सा है, ठीक है। ये एक वेक्टर है f, उसके दो कंपोनेंट बनाए मैंने। तो इसमें कॉस वाला कौन सा है और साइन वाला कौन सा है? हॉरिजॉन्टल वन इज Horizontal to नहीं sine. नहीं 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 नहीं। एंगल सर जब तक थीटा नहीं बनेगा तब थीटा तक। नहीं जब देंगे। तक मैं थीटा नहीं बनाऊंगा आप नहीं बता सकते हो। थीटा बना दिया तो आप राइट थे, हॉरिजॉन्टल कॉस है और ये वर्टिकल साइन है। पर कुछ किसी ने मेरे साथ चालबाजी कर दिया, उसने बोला मैं इसको थीटा लूंगा, मैं रट के गया था हॉरिजॉन्टल कॉस और वर्टिकल साइन, तो 0 मार्क मिलेगा ना मुझे। हाँ तो ये याद रखो, थीटा के बाजू वाला कॉस और दूसरा वाला साइन, ठीक है। इतना तो समझ गए अभी आप? यस सर। ठीक है, अभी आप अगला डायरेक्शन आराम से समझोगे। Is it necessary that those two rectangular components are always horizontal vertical? No, they are always नहीं perpendicular. This is correct. तो ये एक वेक्टर है, इसका मैंने एक कंपोनेंट ऐसा निकाला, दूसरा इसको परपेंडिकुलर निकाला। अगर ये थीटा तो इसको क्या बोलूं मैं? कॉस कंपोनेंट ना। कॉस। तो मेरा जो पी बार है ना वो तो ये डायरेक्शन में था, माइनस से प्लस क्यू, ये पी बार है, ठीक है। तो उसका एक कंपोनेंट मैं इधर ले लो ऐसे पी कॉस थीटा, दूसरा इसको परपेंडिकुलर पी साइन थीटा। नई बात हजम हुई? हुई। आ गया, समझ में आया? यस सर। देखो फिर से देख लो मेन डायग्राम में, पूरा पूरा क्लियर कर देता हूँ। नेगेटिव चार्ज at A, positive charge at B, at distance 12, it is called electric dipole. O is center, OA equals to OL, B both are LL. Let P be a point at a distance R from center O such that line joining OP makes angle theta with axis. Now P bar is a vector, P मतलब electric dipole, directed from negative to positive, जब एक्सिस पे होता है। तो ये P बार है, we can resolve this into two component along OP। तो इधर थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, चलेगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। यस। along OP, this is P cos theta। दूसरा वाला इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। अदर वन परपेंडिकुलर P sin थीटा। तो इसका मतलब ये A1 B1 एक डाइपोल के जैसा काम कर रहा है, जिधर डाइपोल P cos थीटा है, और ये A2 B2 दूसरे डाइपोल के जैसा काम कर रहा है। मतलब डाइपोल एक ही था बट ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसा सोच सकते हैं। एक के पास डाइपोल मोमेंट P cos थीटा, दूसरे के पास डाइपोल मोमेंट P sin थीटा। क्लियर? यस सर। नाउ कैन एनीबॉडी सजेस्ट मी कि P A1 B1 के एक्सिस पे है क्या, इक्वेटर पे है क्या, किधर भी है? एक्सिस। एक्सिस पे, लाइन जॉइनिंग A1 B1 मतलब एक्सिस। एक्सिस का क्या फॉर्मूला मिला हमको? 1/4πε2P/r³ ना। यस। और इक्वेटर का क्या मिला? 1/4πε पी अपॉन P/r³। आर। हो गया। सो P lies on the axis, so intensity at P due to P cos theta on axis is given by E1 equals to 1/4πε0 2P/P, मतलब P cos थीटा आपकी बारी है, डिस्टेंस r³। ये हो गया मेरा पहला इंटेंसिटी। किसी को कुछ डाउट लग रहा है किधर भी? सेम मैग्नेटिज्म में आएगा। ये सबको समझ में आया बात? ये यस। देखो पूछ लो, ऐसा हेजिटेट मत करो, फिर मैं मैग्नेटिज्म में डायरेक्ट लिख दूंगा ऐसा। एवरीबॉडी हैज फॉलोड? तृप्ति, तन्मय, Yes, sir. गार्गी? Yes, sir. ओके डियर, जस्ट कॉपी दिस वन। तो P वाला पॉइंट जो A1 B1 के एक्सिस पे है, जिसका
डाइपोल मोमेंट p cos थीटा, तो आंसर मिला 1/4πε2p cos थीटा r क्यूब। डायरेक्शन a1 b1 से बाहर, मतलब माइनस क्यू से प्लस क्यू, फिर सेम लाइन। एक्सिस वाला was along the axis only। अब इक्वेटर का डायरेक्शन बताता हूँ। रिटर्न yes, can I go ahead now? अब ये देखो, ये A2 B2 उसका इक्वेटर पे है ना पॉइंट P, है ना, और इसका डाइपोल मोमेंट है P sin थीटा, ऐसे उसके इक्वेटर पे है ना ये P। नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। इक्वेटर पे है तो एंटी पैरेलल होता है ना, ये इधर A से B, ये इसका उधर जाएगा ना ऐसे। ये हो गया E2, मतलब ये एक्सिस वाला है और ये इक्वेटर वाला है। सो आई कैन से इंटेंसिटी at P due to P sin theta on equator is E2 equals to 1/4 pi P sin theta upon R cube, equation 2। Got it? Hello? Yes, clear concept? यस सर। Yes, sir. Then please copy second point and diagram may show E1 E2 properly। So don't try to solve many sums, but try to understand concept first, then you can do any number of sum। फिर तो लिमिटेड करोगे तो भी फुल मार्क मिलेगा, लेकिन बिगर समझ के अगर 10,000 भी किया सम तो भी नहीं मार्क मिल सकता है, क्योंकि हर एक चैप्टर आप ये बाहर थोड़ी मार सकते हो। You have completed now? Hello? Have you completed? अब जरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये P, ये Q, ये एक्सिस है, और ये PR इक्वेटर जैसा हो गया, तो ये रिजल्टेंट पाइथागोरस थ्योरम से ये आएगा ना रिजल्टेंट, है ना। E दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो रिजल्ट क्या होता है, पाइथागोरस के नहीं? यस। हाँ, थोड़ा भी मन में डाउट है तो आप पूछ लो, क्योंकि थोड़ा वेक्टर भी आ रहा है ना इसमें। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर, रिजल्ट इज पाइथागोरस थ्योरम। इक्वल और परपेंडिकुलर तो क्या होएगा रिजल्ट, बोलो, बोल सकते हो? √2 टाइम्स हो जाएगा।
इक्वल नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम का, इक्वल और परपेंडिकुलर तो शॉर्टकट √2 टाइम्स, इक्वल और 60 तो क्या होता है? √3 वेरी वेरी √3 इक्वल एंड 120 to देन the equal. equal. Correct. even. Correct. So intensity resultant intensity at any point on axis, sorry, at any point axis, at any point due to electric dipole, comma, E will become root of E1 square plus E2 square. That is nothing but root of 1 upon 4 pi epsilon naught 2p upon r cube square plus 1 upon 4 pi epsilon p upon r cube the whole square. Please write this much. This is p cos theta. Here it will be p sin theta. P sin 2p cos theta upon r cube, that is p sin theta upon r cube square. Completed? Hello? Yes, sir. Then till that 1 upon 4 pi p upon r cube कॉमन वहां तक हो गया आपका? Yes, sir. अच्छा ठीक है, अभी 2 ही लाइन बचा है, ज्यादा नहीं. Now this is 1 upon 4 pi epsilon naught p upon r cube root of 4 cos square. Can I write 3 cos square plus 1 cos square plus this sin square theta? मैंने 4 cos square को 3 plus cos square लिख दिया. Now what is sin square plus cos square? Is it 1? 1. So this is formula आ गया. E at any point due to electric dipole is 1 upon 4 pi epsilon p upon r cube root of 3 cos square theta plus 1. Copy now to this. So intensity axis वाला मिला 1 upon 4 pi epsilon 2p upon r cube. Equator वाला 1 upon 4 pi epsilon q upon r cube. Any point वाला
1 upon 4 pi epsilon P upon R cube root of 3 cos square theta plus 1. Done? Full? Yes, sir. Okay. If point is on the axis, can you tell me what is direction of E axis? It is along P bar, na? E bar. Yes, sir. But if it is on the equator, then anti-parallel. Parallel. अब Anti-parallel ना sir? एंटी पैरेलल अब अपना पॉइंट कहीं पे भी है तो उसका ये इक्वेटर मिला, ये एक्सिस मिला, ये बीच में उसका रिजल्टेंट आ गया. सो इसका रिजल्टेंट आई एम टेलिंग सपोज वो एंगल अल्फा बना रहा है विथ ओपी. तो tan अल्फा कैन आई से इट इज ऑपोजिट साइड? नहीं, ऑपोजिट साइड है ना. ऑपोजिट मतलब वो Yes, sir. इक्वेटर वाला अपॉन एक्सिस वाला. सो टू गेट डायरेक्शन ऑफ ई, if point is anywhere, ये अल्फा निकालना पड़ेगा. So I'm writing like this. Let E at any point P due to electric dipole makes angle alpha with OP. Therefore, from figure, tan alpha equals to opposite side, that is E equator upon E axis. Equator is 1 upon 4 pi epsilon P sine theta upon R cube, and axis was 1 upon 4 pi 2p cos theta upon R cube. 1 upon 4 pi epsilon cancel, P upon R cube cancel. So we get tan alpha equals to 1 upon 2 sine theta upon cos theta is tan theta. So angle made by resultant intensity is tan alpha equals to half tan theta. Clear? Hello? This also followed? Hello? Yes, sir. Right, now full. Now I'm doing 2-3 numericals so that theory से थोड़ा सा side हो जाते हैं. 2-3 numericals I am doing so that you are not getting bored.
You got just now one PDF in the group. Got it? Come to page number 37. उसमें थोड़ा नोट्स भी है 12th का, तो आपको कुछ रेफर करना होगा तो कर सकते हो. Come to page number 37. This I can clear full. Next class I will complete theory of flux, Gauss's theorem, and intensity of the body. That means solid figure, not the point charge. Can I clear this from the screen? Yes, sir. Yes, sir. Just come to page number 37 if you can manage. दिख रहा है क्या page number 37? Yes, sir. हाँ. First sum. Mansi, read first one. Yes, Gargi, you read. Two identical metal spheres carrying charges of 9 into 10 raised to minus 9 coulomb and minus 3 into 10 raised to minus 9 coulomb are brought in contact, and then they are separated by a distance of 3 meter and kept in the medium of dielectric constant 5. What is the electrostatic force between them? Okay. चलो, किसी को क्लिक हुआ ये सम? A and B को एक साथ लाया, तो what will be total charge? A और B को एक साथ लाया तो टोटल चार्ज कितना होएगा? half of total. Half. नहीं, टोटल चार्ज 16. पूरा ऐड करो ना, सेपरेट करोगे तो हाफ हाफ होगा. 6 into 10 raised to minus 9 होगा ना टोटल. 9 into 10 raised to minus 9 plus minus 3 into 10 raised to minus 9, तो 6 हुआ ना टोटल. Not followed? By law of conservation. Follow. Now when you separate, इसको मिलेगा 3 मतलब हाफ, और इसको भी मिलेगा 3 ना, तो ये मेरे लिए Q1 हो गया, ये Q2. Separated by distance of 3. Dielectric 5. What is formula for force? 1 upon 4 pi K epsilon naught Q1 Q2 by R square. Agreed? So 9 into 10 raised to 9. 3 into 10 raised to minus 9. 3 into 10 raised to minus 9. This is 3 square, which is 9. 9 cancel. 10 raised to minus 9 minus 9 cancel. So final answer 9 into 10 raised to minus 9 Newton. Clear? What will be nature of force? Attraction or repulsion? Starting में attraction था. Now, Repulsion. so Repulsion. if they say nature, it will be repulsive force. Value is 9 into 10 raised to minus 9. है नहीं किधर भी? वो dielectric constant 5 भी 5 भी था, वो देखा नहीं. Sorry. 5. So 1.8 into 10 raised to minus 9. Suppose they make this problem slightly difficult and the spheres are not identical. Then how you are going to get charges? Sir, R1 upon R1 yes. plus R2 into Okay, Q total. Okay, perfect. R1 upon R1 plus R2 of Q total and R2 upon R1 plus R2 of Q. Perfect. Done, na?
Hello, completed? Yes. Okay, next one. 1.5 into 10 raised to 19 electrons are removed from copper plate. Then what is charge on the copper plate? Number of electron removed is 1.5 into 10 raised to 19. Now because it is removed, therefore charge will be positive. So Q will be plus Ne. 1.5 into 10 raised to 19. 1.6 into 10 raised to minus 19. So 1.5 into 1.6, 16 into 5 is 18, 24, 2.40 cool. Okay. Done. Can we start third now? Yes. Yes, sir. Two charged spheres separated by distance d exert force F on each other when they are kept in air. But what will be the force when they are immersed in medium of dielectric constant 5? F So by 5. already I have given you formula FA by K. So this is F by 5 हो गया एकदम फटाफट आएगा अभी theory अच्छे से पढ़ा है. So could you repeat the question? Two charged spheres separated by distance d are acted upon by force F. When they are immersed in water of dielectric constant 5, then what will be the answer? Okay. Done. Huh? Now fourth. 2-point charge Q1, Q2 repel each other with a force of 100 Newton. So first force of repulsion is 100 Newton. Q1 is increased by 10%. So Q1 dash will be 110 upon 100 of original. Increased by 10% means original plus 10 upon 100 of original. And Q2 dash is decreased by 10%. So 90 upon 100 of origin. Find what is new force if distance is same. Find change in the force. So because distance is same and our formula of force is 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. Everything will get cancelled except the charges. So ratio of force will be Q1 Q2 upon Q1 dash Q2 dash. So 100 upon F2 is Q1 Q2 upon 110 upon 100 Q1 into 90 upon 100 of Q2. Q1 Q1 Q2 Q2 cancel. 1 0 1 0. Here also 1 0 1 0. So 100 upon F2 equals to 10 into 10 100 will go up upon 11 into 9 99. Therefore F2 becomes 99 Newton. That means it has decreased or increased. Earlier it was 100, now it is 99. Decreased by Decrease. what? Decrease. By 1. Okay. So decreases by 1 Newton is the answer.
decreases by 1 Newton. Completed, sir? Hello? Yes, completed full. Hello? Yes, sir. So that's all for today. Please do 10 more sums. Further,